27 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে নাহৰকটীয়াত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত শিৱ জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ প্ৰধান বিনীতা দিদি নাহৰকটীয়াত উপস্থিত হৈ নাহৰকটীয়াবাসী ৰাইজৰ আগত ঈশ্বৰীয় বিশ্ব বিষয়ে মত বিনিময় কৰে। তেওঁক এখনি অৰুণা আৰু গোলাপ ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলক ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগেদি এখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান বিনীতা দিদিয়ে ভাষণত কয় যে সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰ আঁতৰ কৰোৱা, মিছা কথা কোৱাৰ পৰা আঁতৰত থকা, মানুহৰ অন্যায় কাম নকৰা, বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰা, সকলোকে সন্মান কৰা, প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা দিয়াৰ বিষয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে। শেষত বিনীতা দিদিয়ে কেক কাটি এই শিৱ জয়ন্তী সমাপ্ত কৰে। নাহৰকটীয়াৰ বহু সংখ্যক পুৰুষ মহিলা এই শিৱ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आज जो शिवरात्रि के अवसर पर नाहरकटिया में सुंदर कार्यक्रम हुआ, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि इसके द्वारा जो मेडिटेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें नाहरकटिया के अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। मैं पहले भी प्रजापति सुंदर शिवानी बहन के माध्यम से जुड़ा हुआ था और मैं उनका कार्यक्रम देख रहा था। ये हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, मन में शांति और विश्व में प्रेम बंधुत्व का जो 144 देशों में जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग नाहरकटिया में जुड़ेंगे। हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। लगभग 1 तारीख से हमने ये प्रोग्राम चारों तरफ मना रहे हैं। आज यहाँ पे और इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि सभी लोग मन की शांति जो ढूंढ रहे हैं वो कैसे उनको सहज प्राप्त हो, क्योंकि परमात्मा पिता है, हम सभी बच्चे हैं। तो उस पिता परमात्मा जिनको हम नाहरकटियार পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।